Bangladesh was once the second poorest country in the world, but now it's one of the fastest growing economies. The land of Bengal certainly deserves much more respect than the world gives it. As someone who comes from a highly underrated country. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिटफाट होंगे। व्यूअर्स, अमेरिका के एक जर्नलिस्ट हैं, बड़े फेमस, उन्होंने कहा है कि जिस तरह से हमें बांग्लादेश की रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी, इज़्ज़त करनी चाहिए थी, उस तरह से हम नहीं करते। उसकी शायद वजह ये है कि ये एक यंग कंट्री है, यानी रिसेंटली आज़ाद हुआ है। 50 साल कोई इतना ज़्यादा टाइम तो नहीं ना होता। तो एक वो ये कह रहे हैं कि वेस्टर्न कंट्री में जब बांग्लादेश का नाम लिया जाता तो लोग ये समझते हैं कि बहुत ही भूखमरी के हालात, गरीब लोग हैं वहाँ पे, पॉवर्टी है, और इसके साथ साथ शायद वो गोरे नहीं हैं, जिसकी वजह से उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। लेकिन वो कह रहे हैं कि इनकी अगर स्टोरी देखी जाए, इनकी अगर हम पढ़ें इनके बारे में, तो हमें पता चलता है कि किस तरह से जनाब ये बांग्लादेश इतनी ज़्यादा मुसीबतों में घिरा हुआ था। साइक्लोन में तूफ़ान आते थे, फ्लड आता था, क्लाइमेट चेंज अफेक्ट हुआ, और फिर दुनिया का दूसरा मुल्क था जो सबसे गरीब मुल्क था। आप अंदाज़ा लगाएं, सेंट्रल कांगो के बाद बांग्लादेश दूसरा बड़ा तो नहीं कह रहा, दूसरा मुल्क था जो गरीब मुल्क था, यानी जिसका जो पर कैपिटा इनकम भी हम देखें तो वो कांगो के साथ मिलती जुलती थी। दुनिया का सबसे गरीब मुल्क तस्वुर किया जाना चाहता था बांग्लादेश जब आज़ाद हुआ है। और ये एक मैं आपके पास एक मैं स्टैट्स भी रख देता हूँ, फैक्ट्स फिगर्स भी आपके सामने रख देता हूँ कि बताया जा रहा 15 लाख लोग मारे गए थे भूख से, गुर्बत से, बेरोजगारी से जब आज़ाद हुआ था। सिर्फ $18 थे ढाका के बैंक में। तो वहाँ से यानी दूसरा बड़ा जो गुर्बत के लिहाज से मुल्क था वो बांग्लादेश था, और वहाँ से सफ़र शुरू होता है कहाँ तक, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की तरफ। क्या बात है, ये अमेरिकन जर्नलिस्ट कह रहे हैं। और फिर वो कह रहे हैं इसको नेक्स्ट चाइना की रूप में देखा जा रहा है, यानी ये साउथ एशिया में ये चाइना की जिस तरह से इकॉनमी है उसी तरह इसको देखा जा रहा है। और इसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि नेक्स्ट इकॉनमी सुपर पावर के रूप में, एशिया का सुपर पावर अगर देखा जाए, एशियन टाइगर के रूप में इसको देखा जाए तो ये बांग्लादेश है। क्योंकि बांग्लादेश की जो गारमेंट्स सेक्टर है व्यूअर्स, उसकी जो एक्सपोर्ट्स है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है आफ्टर चाइना। तो वो अमेरिकन जो जर्नलिस्ट हैं उन्हीं की हमारे पास एक वीडियो क्लिप है, वो व्यूअर्स देखेंगे। वो कह रहे हैं कि हमें रिस्पेक्ट देना होगी बांग्लादेश को, और उसको तस्लीम भी करना होगा कि वो आने वाले दिनों में, यानी उसका जो पास्ट है वो तो जिस तरह से गुजरा वो तो सब ने देखा, अच्छा नहीं था, लेकिन उसका जो अब फ्यूचर है वो बड़ा रोशन है। वो ये कह रहे हैं कि सबसे अच्छा रहने के लिहाज से जो कंट्री एशिया में मुझे अगले कोई 8-10 सालों में लग रहा है, वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश है। तो इसी के ऊपर व्यूअर्स वीडियो है, वीडियो देखेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर नए आए हैं, अभी विजिट किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें, कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। लें जी, वीडियो देखते हैं, जुड़े रहिएगा अंत तक। 3, 2, 1 एंड क्यू। Let me tell you about one of the worst countries in the world. Its capital is one of the least livable cities, incredibly polluted and one of most densely populated. Traffic is insane. Poverty is just everywhere. Some of you have been asking me for a video about Bangladesh, and I can't help but ask, why? Is there even anything good about Bangladesh? Wow, nice fam. It's actually quite difficult to say all of these bad words. But sadly, every negative thing I've said is what some people instantly think when they hear the country Bangladesh. They think it's back-minded third world country with no power. But let this video prove you wrong. This is what the world never knew about Bangladesh. First up,
I bet most of you don't know that YouTube was co-founded by a Bangladeshi German. Yes, the 2 billion people from all over the world who use this platform have to thank Jawed Karim, who even uploaded the very first YouTube video. Still on the internet, would you believe that the largest internet school in the world, which has educated over 10 million students, was also founded by part Bangladeshi Salman Khan, and the longest female-led government in the world also in Bangladesh. In fact, female Bangladeshis are so efficient and hardworking that 80% of the country's workers are actually women. Now, I am personally excited to know that Bangladesh is also a welcoming place for vegetarians like me. So much fresh fruit around, it looks so good. No wonder it's also one of the least obese countries in the world. And from keeping healthy to keeping peace, Bangladesh is also a major contributor to the UN peacekeeping operations, having the 3rd largest military in South Asia. Now, Night Fam, here comes the most impressive of all. Bangladesh was once the 2nd poorest country in the world, but now it's one of the fastest growing economies. See, only 3 years after becoming an independent country in 1971, extreme hunger killed 1.5 million Bangladeshis. Add to that the fact that the country has always been hit by massive floods. For a long time, Bangladesh was incredibly poor and politically unstable. It's never easy to rebuild your country when things are so difficult. But because bad past doesn't mean bad future, Bangladesh made an impressive shift. Not only in fighting poverty over the years, but now being a model for development for the rest of the world. Because of its booming garment industry, some people call Bangladesh the next China, economically speaking. After all, it's one of the top exporters of clothing in the whole world. And having all of these positives in mind, the land of Bengals certainly deserves much more respect than the world gives it. As someone who comes from a highly underrated country of Poland, a very globally unpopular country where so many people don't know much about it, I am very passionate about giving credit to countries for their positives. Bangladesh may be a young... व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी, अमेरिकन जर्नलिस्ट इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि सबसे गरीब मुल्क था, पुअरेस्ट कंट्री थी कांगो के बाद, और आज वो दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी वाला मुल्क बन गया है। यानी ये देखें किस तरह से हार्ड वर्किंग की बांग्लादेश ने। गारमेंट्स का एक ऐसा सेक्टर था जिसके अंदर पार्टिसिपेट किया बांग्लादेश की विमेन ने, और फिर आज इतना ज़्यादा बूम पकड़ा इस शोबे ने कि दुनिया में इन्होंने हलचल मचा के रख दी। और मैं समझता हूँ कि ये एशिया में दुनिया में एशिया को तो एक साइड पे रखते हैं, सबसे ज़्यादा चाइना करता है और फिर बांग्लादेश करता है एक्सपोर्ट्स गारमेंट्स की। दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स में आपको बांग्लादेश का ही कपड़ा मिलेगा। तो इस तरह से बांग्लादेश ने मेहनत की और फिर आज जिस मकाम पर पहुंचा है, गोरे भी तारीफ करने पर मजबूर हैं। व्यूअर्स, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है? अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।